So your next concept is what? Next concept is, suppose what you want to read student marks from the user, and based on given marks you have to decide कि क्या student pass हुआ है या fail हुआ है. And the criteria is what? If marks greater than or equal to 30 तो आपको बताना है पास हो गया है, अदरवाइज आपको बताना है फेल हो गया. So I am reading the value of marks using input function and also converting these marks into integer. So I am assuming जो marks है वो integer type के हैं. Enter marks. Now here I need to write statements like print pass, print happy, print fail, print sad, then print by. See, जितने भी स्टेटमेंट अभी तक हम कोड में लिखते हैं, they all are executed sequentially. They all are executed sequentially. It means first Python interpreter will execute this statement, and after the completion of this statement, interpreter will execute this statement. Then this dot 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 dot. Now, if I run this code and if I enter the marks 49, you will see pass, happy, fail, sad, by. हम ऐसा नहीं चाहते थे. हम क्या चाहते थे? हम ये चाहते थे कि या तो ये दोनों चलें या फिर ये दोनों चलें. ये चारों एक साथ कभी नहीं चलने चाहिए. अगर ये दोनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो चुके हैं तो इन दोनों को नहीं चलना, और अगर ये दोनों नहीं चले हैं तो इन दोनों को ही चलना. It means this time you need to execute your statements according to particular situation or particular condition. So in Python programming language, we are having two types of statements. First one is your unconditional statement. Second one is your conditional statement. From day one, जितने भी statements हमने लिखे हैं, they all are unconditional. Unconditional का मतलब है कि अगर वो लिखे हैं तो जिस सीक्वेंस में लिखे हैं उस सीक्वेंस में उनका एग्जीक्यूशन कर दिया जाएगा. कंडीशनल स्टेटमेंट्स का मतलब होता है कि जरूरी नहीं है कि जब प्रोग्राम चलेगा तो उनका एग्जीक्यूशन होगा ही होगा. कोई पर्टिकुलर क्राइटेरिया है, कोई पर्टिकुलर कंडीशन है, अगर वो सेटिस्फाई हो रही है तभी इंटरप्रेटर स्टेटमेंट्स को चलाएगा, अदरवाइज नहीं चलाएगा. ठीक है, तो ऐसे स्टेटमेंट्स को बोलते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स. सो इन दिस प्रोग्राम यू कैन सी आई एम हैविंग 1 2 3 4 5 6 total 6 statements are there in this code, and out of these 6 statements first statement मुझे यूज करना है अनकंडीशनल तरह. मतलब जितनी बार प्रोग्राम चले पहला स्टेटमेंट जरूर चलना चाहिए यूजर इनपुट लेने वाला, एंड लास्ट स्टेटमेंट दैट इज बाय. प्रोग्राम में कुछ भी हो लेकिन बाय प्रिंट होना चाहिए. ठीक है, बट दीज 4 स्टेटमेंट्स I need to execute according to the given condition. If this condition is true, then I will execute pass and happy statement. If this condition is not true, then I will execute fail and sad statements. It means these 4 statements are conditional statements. Now the question is how to write conditional statement in Python coding. Fine. So in Python programming language, we have given a concept called if condition. With the help of if condition, we can write conditional statement. So what we need to write here, after first statement, I need to write here if keyword. So if is a Python keyword, and we have to write this if keyword in lowercase. Fine. So I will write if in lowercase. After this if keyword, I need to put parenthesis, and parenthesis, this is optional. Fine, but generally we use parenthesis, and inside this parenthesis I will write my condition. So your condition is if marks, that is m, is greater than or equal to 30.
सपोज करिए ये क्राइटेरिया हम लेकर चलते हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग मुझे अपना कोड बनाना है। सो इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 30, ऑलरेडी हमने ग्रेटर देन इक्वल टू कॉन्सेप्ट को कवर किया हुआ है, ठीक है, इक्वल टू 30, देन आई नीड टू एग्जीक्यूट दीज स्टेटमेंट्स 1 2। नाउ द थिंग इज व्हाट आई नीड टू क्रिएट बॉर्डर कि ये स्टेटमेंट्स इफ के अंदर आएंगे, ये इफ के बाहर रहेंगे। तो अब कैसे पता चलेगा, अगर आप ऐसे लिखेंगे तो कैसे पता चलेगा कि इफ के अंदर कौन कौन से स्टेटमेंट्स रखने हैं? ऐसे तो हमें लग रहा है कि इफ के बाद जितने स्टेटमेंट्स हैं वो सारे के सारे इफ का ही पार्ट है। नो। सो व्हाट वी नीड टू क्रिएट, वी नीड टू ग्रुप द स्टेटमेंट्स दैट वी नीड टू एग्जीक्यूट एज अ पार्ट ऑफ इफ कंडीशन। सो कैसे ग्रुप बनाए? इन most of the programming languages like in C, C++, Java, whenever you need to group statements in a program, so for grouping, what we use curly braces notation like this. It means now there are only two statements of this if condition, है ना? And these two statements will be executed according to the if condition. Now the Python programming language does not support this notation. In Python programming language, if you need to group the statement, no matter it is in if condition or in looping or in functions or in class, whenever in throughout Python, Django, machine learning, AI, deep learning, if anything related to Python and you need to represent group of statements. So in Python, indented block is used to represent grouping. What is this indented block? Indented block का मतलब होता है कि जिस कॉन्सेप्ट का आपको ब्लॉक बनाना है उस कॉन्सेप्ट के बाद आप कॉलॉन पुट करेंगे, पार्ट ऑफ सिंटैक्स। सो यू हैव टू राइट कॉलॉन। इट इज नॉट लाइक कि सर छोड़ते हैं रहने देते हैं, ऑप्शनल नहीं, ऑप्शनल है, इट इज मैंडेटरी, यू हैव टू राइट। एंड ऑल द स्टेटमेंट that you need to execute as a part of if statement, you have to write all those statements using space. So generally we recommend tab space, but it is not a rule. Fine. So now this type of block in Python programming language, this type of block is known as indented block. This is your indented block. इंडेंटेड ब्लॉक। फाइन। और यहाँ पर जो आपका ये स्पेस आता है, ये यहाँ से यहाँ तक का जो स्पेस है, इस स्पेस को बोलते हैं इंडेंटेशन। इंडेंटेशन। फाइन। It means indent is nothing. Indent is like the synonym of the space. On the left space, you can use either left space word in layman terminology, or in Python terminology you will use that is, this is the indent. Fine. Now if I need to exit this if block, then you have to write any statement without indentation. If you write any statement without indentation, it means कि आपका जो ब्लॉक है वो एग्जिट हो गया। यानी कि ये जो स्टेटमेंट है जो आपने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो स्टेटमेंट है, दिस स्टेटमेंट इज नॉट द पार्ट ऑफ इफ कंडीशन। अगर आप यहाँ पर ये लिख देते हैं नाउ this statement is also the part of if condition. Fine. So you have to focus on the indentation. Fine. Now if this condition is true, then Python interpreter executes a statement of this if block. It means you will see output pass happy. But what if this expression returns false? So you can put otherwise condition using else keyword. So else represent otherwise condition. It means in the else you cannot write one more condition. It is the opposite of the if. If this condition is not true, then any statement
that you write in the else block will be executed. So I need to execute these two statements as a part of else block. Now, this is one indented block, that is if indented block. This is another indented block, that is else indented block. Fine. In the if, we need to write condition. And if this condition is true, these statements will be executed. And if this condition is false, then automatically else block will be executed. Fine. Now, ये जो स्टेटमेंट है इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? ये तो चलेगा ही चलेगा, अनकंडीशनल है। या तो ये इफ के स्टेटमेंट के साथ चलेगा या एल्स के स्टेटमेंट के साथ चलेगा, चलेगा जरूर। नाउ लेट मी रन दिस कोड. So if I write here enter marks, and here if I enter 28, so 28 m variable mark का store हो जाएगा. If 28 is greater than equal to 30, condition is false because 28 is not greater than 30 or equal to 30. Fine. It means this expression will return false. If condition is false, then automatically else block is executed. You will see fail said, and then remaining code is executed. Remaining code means any statement written after this if else hierarchy. Fail said by. Now if I run this code again by passing different input like this, enter marks 36. So 36 is greater than equal to 30. Yes, condition is true. 36 is greater than equal to 30. So you will see pass happy. Now this time else block will not be executed because if is executed. Pass happy and then 1. Fine. So now let me explore the concept of this indent. Suppose in my program, I'm not using tab space for indentation. I'm using single space. Syntactically, it is correct. You will not get any error. But this is not the standard. It is not recommended. Fine. Let me run this. Enter marks 45. You will see pass happy. You are not getting any error. Fine. It means as indentation, you can use any number of spaces. Recommended is tab space. Now, rule is what? In a block, you have to maintain symmetric indentation. यहाँ पर indentation आपका एक स्पेस का है और यहाँ पर आपका indentation आपने दो स्पेस का दिया हुआ है. This is syntactically wrong. If I run, you will see the error. Unexpected indent. Indent मतलब होता है स्पेस. एक ऐसा स्पेस जिसकी कोई उम्मीद नहीं थी वो आपका मिल गया, जो कि दिख रहा है. एक ब्लॉक में जो सबसे पहले स्टेटमेंट का इंडेंटेशन है उसी ब्लॉक के सारे स्टेटमेंट का वही होना चाहिए. ठीक है. नाउ इफ आई यूज दिस सिंटैक्टिकली इट इज करेक्ट बट रीडेबिलिटी वाइज इट इज नॉट गुड. अजीब लग रहा है देखने में, है ना. तो सिंटैक्टिकली इट इज फाइन. यू विल नॉट गेट एनी एरर. एंटर मार्क्स. So the recommended way is what? Tab space. Fine. हर ब्लॉक अपना अपना इंडेंटेशन रख सकता है. जैसे यहाँ पर आप देखो मैंने 3 टैब स्पेस यूज करे हैं और एल्स ब्लॉक के सारे स्टेटमेंट में एक ही टैब स्पेस. प्रोग्राम चल रहा है. सो वी विल यूज recommended concept, that is tab space. Fine. So this is what? This is your if condition. This is your else condition. Now the thing is what कि मुझे इसके आगे थोड़ा और समझना है. आपने हमें ये बता दिया कि स्टूडेंट पास है या फेल है, लेकिन हमें आप ये नहीं बता पा रहे हैं कि अगर वो पास है तो किस डिवीजन से पास है. सपोज इफ आई रन दिस कोड, एंटर मार्क्स 89.
तो आप बस पास और हैप्पी कर देते हैं। और अगर किसी के मार्क्स 31 है तो आउटपुट में आपकी सेम फीलिंग आ रही है। तो हम ऐसा नहीं चाहते, हम ये चाहते हैं कि फर्दर आप और इम्प्रूव करें अपने आउटपुट को। लाइक पास फेल के साथ साथ आप ये भी बताएं, पास विद फर्स्ट डिवीजन, पास विद सेकंड डिवीजन, पास विद थर्ड डिवीजन। फेल के साथ बताएं। अच्छा, फेल में तो डिवीजन होती नहीं है कि फेल विद फर्स्ट डिवीजन, फेल तो फेल ही होता है ना। अब किसी के 0 नंबर है तब भी फेल है, 29 है तब भी फेल। फाइन। सो नाउ इन दिस प्रोग्राम I also need to specify the division. So again, यूनिवर्सिटी की तरफ से क्राइटेरिया आएगा और उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ही हम लोग क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे कि हमें आगे बढ़ना है, किस तरह से आगे हमें यहाँ पर बढ़ना होगा। सो अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सिटी वी हैव गिवन, अगर आपके मार्क्स 0 to 29 है, देन इट इज द सिचुएशन ऑफ फेल। इफ मार्क्स 30 to 44 की रेंज में है, देन इट इज द थर्ड डिवीजन मार्क्स, पास विद थर्ड डिवीजन। If it is in 45 to 59, then second division marks. And if it is in 60 to 100, then first division marks. But if you enter marks greater than 100, greater than 100, or less than 0, then you have to generate message invalid marks, because student cannot score more than 100 और नेगेटिव मार्क्स, बिकॉज हमारे यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं। ठीक है, 0 नंबर आएंगे आपके, मिनिमम मैक्सिमम 100 आएंगे। अगर आपके यूजर ने इनपुट नेगेटिव दे दिया या 100 से ज्यादा दे दिया तो इनवैलिड आपको दिखाना। सो हियर यू कैन सी वी आर हैविंग दीज सिचुएशंस। तो पहले आपको ये सीखना होगा कि हम अपने कोड में जब कंडीशन को इंप्लीमेंट करते हैं तो कितनी कंडीशंस हैं। इफ यू आर हैविंग ओनली 2 कंडीशंस, टू लॉजिकली रिलेटेड कंडीशन, then we will use if and else. But if you are having more than 2 logically related conditions, more than 2, logically related conditions, then how to write? Because in else we cannot write one more condition, so you have to use if, elif. So Python has given the concept of elif. In elif, it is the combination of else and if. That's why name elif. In elif, you can write your condition. One more elif. You can write another condition here. So you can have at most one else block for this if condition, but you can have multiple elif blocks for the same if condition. Optionally, in the last, if you want, you can also have else condition like this. तो जब कभी आपके पास दो कंडीशंस होती हैं जो आपस में लॉजिकली रिलेटेड हैं तो इफ एल्स लगाते हैं, और अगर आपके पास दो से ज्यादा कंडीशंस हैं तो आप क्या लगाते हैं, यहाँ पर इफ एलिफ एलिफ का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। फाइन। नाउ आई नीड टू इंप्लीमेंट सेम कॉन्सेप्ट। So here first I will write
if marks is greater than equal to 0 and I need to work on boundary condition, जीरोस या जीरो से ज्यादा है और 29 तक होने चाहिए एंड marks is less than equal to 29, then we have to write this message. Now one more condition I need to implement. Elif. In elif I can write another condition. So here variable is m, not marks. Elif m is greater than or equal to 30 and m is less than or equal to 44. It means you have to print a message like pass with 30. Now one more condition I'm having. Elif marks is greater than equal to 45 and marks is less than equal to 59. It means second division. Pass with second division. Now Elif m is greater than equal to 60 and m is less than equal to 100. Up to 100 I need to consider. Then I will print pass with first division. Now, if user enters marks above 100 or below 0, then I will print message invalid marks. Now, जब हम यूजर से इनपुट लेकर आएंगे तो सबसे पहले हमारा ये वाला कंडीशन टेस्ट होगा. लिसन केयरफुली. If this condition is true, then Python interpreter will not execute all these conditions. Fine. And control jumps to this statement directly, that is print. Now, if this condition is false, now Python interpreter will check this condition. Fine. And if it is true, उसके बाद इनमें से कोई भी चेक नहीं होगी. एग्जीक्यूट तो बहुत दूर की बात है, चेक भी नहीं करेगा इंटरप्रेटर, क्योंकि दीज आर द लॉजिकली रिलेटेड कंडीशंस. एक बार में एक चलेगा. इट इज लाइक रेडियो बटन. यू कैन सेलेक्ट वन रेडियो बटन एट ए टाइम. So these all are like radio button. This is first radio button, this is second radio button, third, fourth, fifth. एक बार में एक ही चलेगा, सारे नहीं चल सकते. अगर ये फॉल्स है तो फिर इसको मौका मिलेगा. ठीक है. और अगर ये फॉल्स है तो फिर इसको मौका मिलेगा. और अगर ये भी फॉल्स है तो फिर ये चलेगा ही चलेगा. ठीक है. नाउ लेट मी रन दिस. Enter marks. So if I write here enter marks like 29, you will see fail. Now if I run enter marks 120, you will see invalid marks. If I write 69, pass with first division. If I write 32, pass with third division. Then fine. So this is the concept of if elif block. So एक if के लिए एक ही else block आप बना सकते हैं. एक if के साथ जितने चाहें उतने elif आप लगा सकते हैं. ऑप्शनली आप else का भी यूज कर सकते हैं इसमें. ठीक है. जब आपके पास एक से ज्यादा यूज नहीं कर सकते हैं. which one? elif के जगह अगर हम if ही यूज करें तो? Now the question is what he is saying. What will happen if I use instead of multiple elif, if I use multiple if? If m is
greater than 100 or m is less than 0, then invalid mode. So if I run this code again, you will see the same result, invalid mode. Pass with second division. Now who will tell the difference? We are getting the same result from both the programs. I think the main difference that it will execute all if statement, Exactly. It is the basically execution time. According to output, you will get same result. But according to execution time, if I write here, execution time of this program is like T1, and the execution time of this program is like T2. Definitely, T1 is greater than T2. Because here Python interpreter tried to execute all the conditions, no matter कि इससे पहले जो if लिखा था वो ट्रू है या फॉल्स है. अगर मैंने यहाँ पर इस if में कुछ लिखा और मान लीजिए ये हमारा ट्रू हो गया है, तो आउटपुट आ गया फेल एंड सैड. मतलब अब इन सबको चलने का मतलब ही नहीं है कोई. बट पाइथन इंटरप्रेटर नहीं मानेगा, वो बोलेगा इफ लिखा है आपने, मैं चलाऊंगा. भले ही ये फॉल्स हो जाए इसलिए ये मैसेज प्रिंट नहीं होगा, ये फॉल्स है इसलिए प्रिंट नहीं होगा. तो हमने चेक ही क्यों करवाना है कि ये फॉल्स है या ट्रू है, जब ऑलरेडी ये चल चुका है तो मुझे इनको चलाने की जरूरत ही नहीं है. बट इफ यू राइट इंडिपेंडेंट इफ, देन Python interpreter executes all the if. It means all these conditions are not logically related. These are considered as independent conditions. So whenever in your program, if you need to work on independent conditions, then this is a solution. If you need to work on logically related, so what is the meaning of this logically related word? If multiple conditions are using same variable, it means these conditions are logically related. Here you can see in all the conditions you are using same m you are using here. It means these are not independent conditions, these are logically related. Fine. So according to the output you will see same result, but according to execution time this approach is good. So is the other one called nested if? No, इसमें से कोई भी nested if नहीं है. This is if elif condition, this is multiple if condition. इनमें से कोई भी nested condition अभी नहीं. Nested means we will write another condition in the block of first condition. So in both the programs we have written conditions at top level. Now let me discuss some use cases, then I will discuss the concept of nested condition. What will happen? What will happen if I write if here India? So I'm creating some use cases related to if else. So if, yes, सर पिछले वाले प्रोग्राम में जाइएगा. ये लो सर यहाँ पहला स्टेटमेंट में और भी चलता. और हाँ, क्योंकि दोनों में से कोई एक भी सही है तो नहीं, देखो प्रॉब्लम आ जाएगी ना. मान लो आपने मार्क्स एंटर करा दिए 80. अब सोचो m इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ट्रू या फॉल्स? ट्रू. ट्रू. तो आप तो फेल कर दोगे उसे, क्योंकि एक तो सही हो ही गया. सर वहां पे होगा m इक्वल्स टू 0 और m इज लेस देन इक्वल टू 29. अगर वहां ग्रेटर देन हटा दें तब वो और के साथ भी चलेगा. आप क्या करना चाहते हैं? यहाँ पर मैं और लगा दूं.
और m के आगे वो ग्रेटर देन हटा दीजिए, m ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये हटा दूं, बस हाँ। इतना लिख दूं ऐसे करके। हाँ तो आप यहाँ कहना चाहते हैं कि या तो m की वैल्यू 0 हो या m की वैल्यू लेस देन 29 हो। हाँ, तो माइट बी इट विल वर्क, आप ऐसा भी कर सकते हैं, क्योंकि जो लग रहा है वो लग रहा है सही है। अगर m की वैल्यू 0 है या m की वैल्यू हमारा लेस देन 29 है तो हमारा ये फेल और सेट प्रिंट करेगा। बट थिंग इज व्हाट, imagine the situation if the value of m is -10, then सर वो इनवैलिड मार्क्स प्रिंट अरे हो जाए। नहीं, आप अपने वाले पर लॉजिक पर हो ना, इनवैलिड पे क्यों आएगा आपके अकॉर्डिंग? अगर m की वैल्यू -10 आ जाए तो -10 इज लेस देन 29 और नॉट, इसका मतलब ये ट्रू हो गया, फेल फेल आ जाएगा, इनवैलिड मार्क्स चलेगा नहीं कभी नेगेटिव के लिए। ठीक है सर। So I was writing this code. If so, in general, in the if we write Boolean expression. Boolean expression means any expression that returns Boolean value, known as Boolean expression. Boolean values means either true or false. This is the standard. But if I am not following the standard and I'm writing if any value like India, and here I'm writing apple, else mango. So option one is what? Option one is you will get error. It is not correct. You have to write Boolean expression in the if brackets. Option two, no, it is correct. And if it is correct, then obviously this value will be considered as either true or false. If it is true, you will see apple in the result. If it is false, you will see mango in the result. So in Python programming language, in the if condition, if you write value, तो उन वैल्यूज को हमें पहले बता दिया गया है 0, 0.0, empty string, none. All these values represent false, and other values represent yes, Isha, tell me the output. What we will see in the output window if I run this code. इसका मतलब मेरे को समझ नहीं आया क्योंकि इसमें कोई कंडीशन तो नहीं है ना। हाँ, exactly. So thing is what? If I do not write condition in the if expression, instead of expression, if I write any value like India, जैसा अभी लिखा है मैंने, तो क्या इसका इंटरप्रिटेशन ट्रू फॉल्स किया जाएगा? आंसर इज यस। किसके हिसाब से? ये लिखा है, अगर यहाँ पर लिखी वैल्यू 0 है या 0.0 है या एम्प्टी स्ट्रिंग है या नन है तो उसको फॉल्स माना जाए। इसके अलावा अगर कुछ और लिखा हुआ है, जो मन चाहे वो लिख दो, उसका मतलब ट्रू माना जाए। बताइए इसका आउटपुट क्या है? फिर तो एप्पल आ जाएगा ना फिर तो एप्पल आएगा, एप्पल ही आएगा। Now, in place of India, if I write -1, yes, Neeraj, what will be the output?
So if it is true, then what will be the output? Fine. So no matter it is negative value or positive value. Right. Now, in place of -1, if I write here 0, fine. So 0 means false. So you will see mango. Fine. Now, if I run this code again, and if I write here 0.001, yes, True or Rahat, tell It me, will be apple. Rahat. Apple. Fine. So 0.0001, that is true. That is apple. Fine. So if I write here nothing, then if I do not write anything here, so is there any syntax error in my code? Surprisingly not. You will not get syntax error. Because this will be treated as a none. Let me see. Apple. No. Sorry, mango. You are getting output mango. It means it is considered as like none. Fine. So you can consider these use cases. Now, suppose if I write here like 10, and if I need to write one more else block here, print banana. Who will tell? Vishal, tell me the output. If I run this code, then what will the output? Apple से The Apple. syntax, सबको एप्पल खाने हैं. the Because syntax if condition is true. Will it not Condition give an is error? true. Condition is true. ये देखो ना condition. Condition. And Yeah, it's true. actually 2 else work नहीं करेंगे इसमें. So the thing is what? First you need to check any syntax error. So Syntax according error है sir. Syntax error है sir. according Two to else Python work rule, करेंगे. according to Python rule, it is not possible to have multiple else block. Let me check. Might be it work. Invalid syntax. आपका फोकस सीधा यहाँ चला गया और आपने ये नहीं देखा कि if के साथ दो else लगे हुए हैं. If के साथ दो else नहीं लगा सकते. Now, suppose situation is what? Is it possible to use else block independently? Or is it possible to use if block independently? Or is it compulsory or mandatory to write if first, then only you can use else block? Let me write. So if I write this else, print apple, तो क्या ये चलेगा? This is not wrong. चलेगा. I think this is wrong. Invalid. It means you cannot write else block independently. You have to write if block first, then only you can write else. Okay, fine. So is it possible to write else, then if this one, when I'm writing, देखो मेहनत उतनी ही करी है, लेकिन हमने डायरेक्शन चेंज कर दी. देखिए Sir, it won't work now because the syntax is not correct. So first you have to write if, then you have to write else. तो हम लोग मेहनत करते हैं, डायरेक्शन गलत हो जाए तो उस मेहनत का कोई फल नहीं मिलता. सेम यहाँ पर उतना ही लिखा है, एफर्ट उतने ही लगे हैं, लेकिन हमने सिंटैक्स फॉलो नहीं किया. नाउ the thing is what, is it possible to write if condition independently? Yes, Yes. it is possible. Should be. So when to use if condition independently? If we are having
two conditions, then we will use minimum if else. If we are having multiple logically related conditions, then we will use if else. Tell me any situation where just if is sufficient to represent the code. Sir, I have read somewhere there is one statement called pass statement. By using that, we can only print if statement. No need to use else. Syntactically, you are right. Syntactically, it is correct. We can write if condition independently. So I want particular scenario. Okay. So let me- Suppose if I'm printing if 10 or 11, that is condition is true, and with that I'm providing one statement, that statement will be printed. Otherwise, it will go to the next statement. So according to syntax, let me write this. If I write here if 10, and then if I write this print apple, and I am not writing this mango in else block. It means mango statement is unconditional statement. Fine. It It will will always be execute. printed. But this apple statement is conditional statement. Now, if it is true, then you will see this statement as well as this statement in your output. So obviously you will see apple and mango both. Yeah. यहाँ पर if के साथ else नहीं है, सिर्फ if लगा हुआ है. But if I write here 0, now it is false. False. False की वजह से Yeah. नहीं चलेगा. But here you will see mango as output. Mango. But remember, this mango is not due to else. It is unconditional statement. Fine. Now I want real-time scenario where it is required. So now let me discuss that particular real-time scenario. But interesting scenario है पेटीएम का. सब लोग डेली यूज करते हैं. मान लीजिए पेटीएम ने एक ऑफर निकाला हुआ है कि 1000 रुपए का पेमेंट करोगे तो कैशबैक मिलेगा 10 रुपए का. अब इसको मुझे कोड में इंप्लीमेंट करना है. सी पेटीएम की कंडीशन है इफ पेमेंट अमाउंट इज 1000 or greater than 1000, then you will get 10 rupees as cashback. Fine. And or even you have to pay only 990. So I need to write that situation. तो यहाँ पर हम यूजर से अमाउंट पूछते हैं कि यूजर बताओ आपने जो शॉपिंग करी है, जो पेमेंट करना है, कितना अमाउंट आपको पे करना है. So I am writing here enter amount. Now मुझे 10 रुपए का डिस्काउंट देना है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा AMT इक्वल टू AMT minus 10. Now I need to print final amount value is AMT, but this is not the situation. I have implemented wrong situation. So if enter amount is like 1000, so you will pay 990. That's fine. But if your amount is 500 only, according to your code, again you have to pay only 490. So in both situations, आपका जो कोड है वो 10 रुपये आपका माइनस कर दे रहा है. No, I need this statement as conditional statement. Fine. So what I will do before executing this statement, I will check condition. In the if, I will write if amount is greater than equal to 1000, then only I will provide 10 cash back. Now पेटीएम ने ये नहीं बताया कि अगर बंदे ने शॉपिंग 1000 रुपए से कम की करी तो पेनल्टी कितनी लगानी है. ये नहीं बताया कि अगर शॉपिंग अमाउंट 1000 से कम होगा तो क्या करना है. नहीं, सिर्फ एक ही हिस्सा बताया कि अगर 1000 या 1000 से ज्यादा हुआ तो 10 का कैशबैक दे देंगे, अदरवाइज कुछ नहीं करना है. जो चलता आ रहा है वो चलता रहेगा. इट मींस देयर इज नो नीड टू राइट एल्स ब्लॉक. इफ यू राइट दिस एल्स ब्लॉक, देन व्हाट यू विल राइट हियर, बिकॉज यू हैव नॉट गिवन द अपोजिट कंडीशन. अगर पेटीएम हमसे ये कहेगा कि 1000 रुपए से कम का पेमेंट करता है तो सरचार्ज लगाएंगे 10 रुपए का, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर इफ AMT this, then AMT equal to AMT plus 10. No, we have not given this type of situation, so there is no need to write else block. I just write this if, and now see the execution of code. If I write here shopping amount 500, you have to pay whole amount.
that is 500. Now if I run this code again by passing amount like 2000, you have to pay 1990. Fine. So this is the situation where just if block is required. Fine. Now अभी किसी ने एक क्वेश्चन पूछा था, उसको मैं इंप्लीमेंट करने जा रहा हूं, और वो क्या था हमारा, नेस्टेड इफ क्या होता है, एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं. Situation is what? In the same Paytm application, if your shopping amount, minimum shopping amount is 1000, then immediately you will receive 10 cashback. Now, if your shopping amount is 1000, then we also want to provide one more surprise gift, like kind of promo code you have to enter, and if your promo code is correct, additional you will get 10 cashback. So what you need to ask from the user, like your enter promo code. Let me store this promo code into this piece variable. Remember, अगर 1000 से अमाउंट कम है तो मैं प्रोमो कोड के बारे में उसे बताऊंगा ही नहीं. अगर उसका अमाउंट 1000 से ज्यादा है या 1000 है, तब उससे मैं 10 रुपए का कैशबैक देकर फिर प्रोमो कोड की बात भी करूंगा. Now, if this promo code, if I need to write this if inside this if, this is the situation of nested if. If this promo code is equal to India, then I will write this statement also, AMT equal to AMT minus 10. And now there is no need to write else condition for this nested if, बिकॉज अगर प्रोमो कोड इंडिया नहीं है तो मुझे पेनल्टी के बारे में नहीं बताया गया, कुछ और करना है इस बारे में नहीं बताया. फाइन. नाउ लेट मी रन दिस. सो इफ आई रन दिस कोड बाय पासिंग 980, you have to pay whole amount 980. Now if I write here enter amount like 1200, now it is asking for a promo code. Earlier program was not asking for a promo code. Now this time it is asking. So enter promo code. So if I enter promo code value Bharat, it will not give you additional cashback. So you have to pay this time 1190. Now if I run this code, 1200, promo code value is India. Now you have to pay only 1180. So this is the situation of your nested if condition.